Mhm. आने स्टार्ट कर। Good evening, everyone. I am Tripti Bata, and alongside me is Anya Iyer. On behalf of the organizing team, we warmly welcome you all once again to the sixth session of our one-week workshop on qualitative and quantitative data analysis. Yesterday, we had an insightful session on descriptive statistics with Dr. Ashok Kumar, where we learned about the measures of central tendency, mean, median, and mode, and the measures of dispersion such as range, variance, and standard deviation. We also discussed important concepts like measures of skewness, kurtosis, as well as correlation and regression, helping us understand the shape and spread of data more effectively. Now, I'd like to hand it over to Anya to take you through what's planned for today. Thank you, Tripti. Today, we'll be moving on to our next important topic, data visualization. In this session, we'll explore how to represent data visually using different types of graphs and charts. We'll specifically learn about the following: bar charts, pie charts, histograms, box plots, and scatter plots. For those who couldn't join us yesterday, we once again have with us our esteemed resource person, Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor, Department of Statistics, University of Lucknow. Before we begin, we request everyone to please keep your mics on mute unless asked to unmute so that the session can run smoothly without any disturbances. Now, without any further delay, let's begin today's insightful session on data visualization with Dr. Ashok Kumar. Hello, good evening to everyone. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Ananya, there is a little correction in the today's lecture session actually. So we have discussed the graph yesterday, and today we will discuss the testing and regression and correlation things. Okay. Yes, sir. So no issue with that. So first of all, I just want to ask regarding the basic concept of the inference, because today we will discuss the two major topics, that is the inferential statistics along with what we'll say regression and correlation. So first we will discuss the parametric and non-parametric inference, and I think you have the idea about the parametric and non-parametric inference, and then we will discuss the concept of correlation and regression. So this will be the agenda. And you know that when we are talking about the parametric test, then we have the few assumptions. What are these assumptions? The basic assumption is that your data should follow the normal distribution. Okay. So first condition that we have to check whether a given data is normally distributed or not. If it is so, then only we can go for the parametric test. Otherwise, we have to move for to the non-parametric test. And the beauty of the statistics or inference is that we can have the alternative of each and every test which is in the parametric scenario. But the parametric tests are obviously the more powerful test. So that's why we always try to use the parametric test. But suppose the data requirements does not meet the conditions of to apply any particular test, so that we cannot apply that particular test. So in that case, we can move or we can use the non-parametric test. But point is that we should understand in what circumstances a particular parametric or particular non-parametric test can be applied. Okay. So when we are talking about the testing thing, so we have the concept of null hypothesis or concept of hypothesis. So what do you mean by the hypothesis? Hypothesis, specifically, if I talk about hypothesis, the hypothesis is an assumption about the population parameter. A hypothesis is an assumption about the population parameter. So population is defined by the parameter. And the sample
is basically and statistic is a function of the sample observation. So when we talk about the statistic, it means that we are talking about the sample observations. If we talk about the parameter, that means we are talking about the population. So there are many situations where we do not have the known value of the parameter. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम लोगों के पास पैरामीटर के बारे में पता नहीं है. तो इन दैट केस वी ट्राई टू एस्टिमेट the value of the parameter using some samples or sample observations, and the function of the sample observation is known as the statistics. So clearly the concept is, on the basis of the statistic we try to estimate the parameter. That parameter is what that defines the population. So when we talk about a hypothesis, तो hypothesis क्या हुआ? It is an statement. It is a statement or it is a assumption regarding the population parameter. कि कोई भी statement या कोई भी assumption हम जो population parameter के regarding बनाएंगे, that is the hypothesis. We have a two type of hypothesis. One is the null hypothesis and alternative hypothesis. Null means when there is a no difference, no discussion, no kind of basically no difference actually. If what are you saying, I will accept it. जो भी आपने कहा है मैं उसको as it is मान ले रहा हूँ. It means that there is no difference. Or regarding a true statement about the population parameter, that is the null hypothesis. फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन है जिसका मीन हमने कैलकुलेट किया, एंड वी हैव यू आर सेइंग दैट द मीन ऑफ दैट पॉपुलेशन इज 50. ठीक है. So how can I say, how then what will be the null hypothesis? The null hypothesis, the mean of this population is 50. In that case I can have the test and I can use a one sample t test to test this hypothesis. But before going to the t test, we have the certain assumptions. What are these assumptions? So these assumptions are just a minute so that I can open. So just only for the sake of simplicity, I am just sharing my PPT so that we can easily understand this concept only. I will not cover so much regarding the things, but just to have the idea only. So I will skip the slides one by one very quickly. So this all we know that what are the uses and what is the need to study the inferential statistic. This is the basically we are talking about the hypothesis and broadly classified into two parts. That is the hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. Null hypothesis and alternative hypothesis. So null, true statement about the population or population parameter. Alternative, it is just opposite to the null. And null hypothesis for the mean, just I am talking about the mu, that is the population mean, and this is the assumed mean, mu naught. PPT is not visible. Is my PPT not visible? It is visible, sir. It should be visible because I have shared my complete screen. Okay. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So just we are talking about to test this null hypothesis. This is the null hypothesis, and alternative we can have a three types. Two-tailed, when we are saying this mean is not equal to this particular value,
or this mu is less than the population mean is less than this particular value, or the mean population mean is greater than this particular value. So in this case, this is called the critical. We make the two correct decision out of the four, two correct decision and two false or wrong decision. So these false decisions are the type of the first error and type of the second error. And probabilities of type first error is denoted as the alpha, that is the level of significance, and probability of the type second error is the beta. So I am not going too much in detail because I think that you have the idea about the concept of the statistics, inferential statistics. Just I am moving forward to some parametric test only. So these are the parametric tests that comes under the t-test. So these are the basic assumptions for the parametric test, or specifically the t-test. Your data should be normally distributed. Data should be homogeneous, that is the variance should be equal or the same for two sample data only. यदि one sample data की हम बात करें तो उस केस में ये assumption हमारी valid नहीं है. And data have the independent observations and should not contain any outlier. And obviously your data should be either on the interval or ratio scale. If you have any issue, any query, then you can directly ask. Okay. So what is the one sample t-test? Just we want to test the null hypothesis that a mean of the population is equal to a specified value. We will remember this point. The mean of a particular population, or basically what we are testing here, the mean, the data that is coming, that data is coming from which the data which is coming from a population whose mean is equal to mu naught. वो पॉपुलेशन जिससे ये डेटा हमने लिया है, क्या उसका मीन म्यू नोट के इक्वल है, इस बात को हम अंडर एच नोट टेस्ट कर रहे हैं. ऑल्टरनेटिव हमारी किसी भी सेंस में हो सकती है. एंड यू नो वेरी वेल दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक. इट इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नोट, एंड इट फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 degrees of freedom. Similarly, two independent sample. In case of two independent samples, we test that whether the mean of the both samples are same. What does it mean? It means that क्या दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से ड्रॉ हुए हैं, क्या दोनों सैंपल जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ हुए हैं, जिस भी पॉपुलेशन से ड्रॉ हुए हैं, उनके मीन सेम है. इन अदर सेंस वी से द मीन ऑफ दिस पॉपुलर डेटा सेट्स आर इक्वल. जो भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट डेटा सेट है. ठीक. So this is the test statistics. Basically, we will work on the R. That's why we should not. I am not so much bothered about this test statistic. Again, if you have any query related to any statistic, any slide, then I can explain accordingly. But my prime agenda is to how to implement these inferential tests on R along with non-parametric. Paired. In this case, we should have data in the paired form. पेयर्ड फॉर्म, बिफोर एंड आफ्टर. आज हमने कुछ सेम, आज 50 पार्टिसिपेंट का आज हमने टेस्ट लिया, या कोई भी उनका बॉडी पैरामीटर को हमने टेस्ट किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ इंटरवेंशन. हमने उनकी क्लासेस कराई, हमने उनको आर के बारे में पढ़ाया, हमने उनका एक्सरसाइज कराई, हमने उनका वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज कराई, हमने किसी ट्रीटमेंट के लिए किया, कुछ भी हमने कोई एक इंटरवेंशन हमने वहां पर दिया है. And we want to know that we again collect the data from the same participant, same person, same individuals जिस पे हमने पहले लिया था. So in that case it is a paired, and in that case we test that whether the mean of the difference is equal to 0. mean of difference is equal to 0. इसका मतलब कि दोनों जो पेयर्ड फॉर्म में हमारा डेटा आया था उसका मीन हमारा दोनों के मीन सेम है या नहीं है. मीन डिफरेंस तभी 0 होगा जब दोनों सैंपल्स के मीन 0 होंगे. वो सैंपल्स कैसे हैं? आज, एंड वी हैव सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन एंड देन अगेन अ डेटा. सिमिलरली, again this is a simple test statistic. In 1 ANOVA we want to test whether
We want to test whether the means of the P groups are same or not. अब P कह सकते हो, M कह सकते हो, जो भी आपने नंबर पढ़ा है उस केस में आप कह सकते हो अंडर द अल्टरनेटिव दैट एटलीस्ट वन पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट, कि कहीं पर भी ये एक जगह पर भी ये इक्वलिटी आपकी होल्ड नहीं हो रही है। इसकी हम बात करेंगे बाद में। ये सब हमारी फाइनली वी विल हैव द अनोवा टेबल इन दिस फॉर्मेट, this statistics, and corresponding to the parametric test we always have the alternative in the non parametric। नॉन पैरामेट्रिक को लिए जैसे हमने पैरामेट्रिक में बात की, इनिशियली जो टेस्ट मैंने लिखे हुए उनकी बात मैं कर रहा हूं। इनिशियली पैरामेट्रिक के लिए डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वी कैन नॉट यूज द पैरामेट्रिक टेस्ट, सो इन दैट केस वी हैव टू मूव टू द नॉन पैरामेट्रिक। तो किस टेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा टेस्ट हमारा अप्लाई किया जा सकता है नॉन पैरामेट्रिक में, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इज इट ओके? सो विद दिस आई एम मूविंग टू slide to the R code, but the thing is that when we are talking about this test statistic, so always we take the decision that whether this T cal is less than T tab, T tabulated। और tabulated कैसे निकालते हैं हम लोग tabulated निकालते हैं टेबल की हेल्प से। आजकल क्या फंडा है, जनरली इस तरीके से ना निकाल करके जनरली वी कैलकुलेट द पी वैल्यू, एंड इफ इट इज लेस देन, if p value is less than alpha, p value is less than alpha, और इन जनरल अल्फा को हम 5% लेते हैं, ठीक। देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इस स्टेटमेंट को हम लोग याद रखेंगे बस। इन दिस केस यदि कैलकुलेटेड लेस देन टेबुलेटेड है तो इन दिस केस वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो दो स्टेटमेंट ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक। कि यदि कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड कर रहे हैं तो कैलकुलेटेड इज लेस देन टेबुलेटेड, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। और यदि पी वैल्यू लेस देन अल्फा है तो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और ये पी वैल्यू से मतलब है कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक। बस इतना अभी हम ध्यान रखेंगे, इसकी ज्यादा डिटेल में अभी हम बता नहीं रहे। सो जस्ट सी दिस slide. So again, I am starting with this one slide, RM list is equal to LS. So we will have the complete environment. So initially the question is how to test the normality of a data. ठीक? So test the normality, we are using the data set iris, okay? And in this case, we are considering X as a sepal width. X as a sepal width. Directly we can use everywhere sepal width, or just we can store the values of the iris sepal width in a variable in another object, that is X. Is it clear?
or there is, you know that if we are using the attach, then there is no need of iris dollar. But if you are not attaching it, then you have to use iris dollar sepal dot width. That's why I'm using this one. So what is x? X is these type of numbers. This one, 150 observations. Then we can go for the histogram of x. तो you can see हिस्टोग्राम पे यदि हम इस तरीके कोई कर्व ड्रॉ करें इस तरीके का, तो इट्स लुक लाइक अ नॉर्मल कर्व. तो इट शोज दैट this particular data is normally distributed. This particular data is normally distributed, and this particular data is what? That is the data of sepal width. Data of sepal width. Again, can go for the box plot. Box plot. ये हमने कल आपको बता दिए दोनों चीज. जस्ट for the reviewing, I am just using both the commands. In that case, Shapiro test can be used. So when we are talking about the statistic, when we are talking about the testing, so everywhere when we are talking about the testing, so we will have the first null hypothesis and second null hypothesis as well as alternative hypothesis for every test. When we are talking about the hypothesis, when we are talking about the test, तो कोई भी टेस्ट हम यूज करेंगे उसके लिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी. तो व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस Shapiro-Wilk टेस्ट? द नल हाइपोथेसिस दैट H naught is such that data is normally distributed. That is the null hypothesis for these tests. जो भी हमारे नॉर्मलिटी के टेस्ट हैं उसके लिए. तो we can use either the Shapiro-Wilk test or case test. Shapiro-Wilk test is used when n is less than 50. Number of observations n is less than 50. And we will use the case test, Kolmogorov-Smirnov test, if n is greater than 50. Okay, so in this particular case, we have the 150 observation in X. So we will use the case test. How will we use the case test? So we will use the data, that is the X. We will use this P norm. P norm is basically a function for this CDF of normal distribution. CDF of normal distribution. So it is basically test that whether the CDF of this X is equal to the CDF of normal distribution. So basically ये क्या करेगा? It will do F capital F of X is equal to F of normal. ठीक? विद मीन नॉर्मल के केस में जो हमारे डेटा का मीन आएगा उसके लिए हमने कह दिया जो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाई these two only, mean and the standard deviation? Because you know that for the normal distribution we have two parameters, one is mean and second is variance. So rather than using the variance we will use the standard deviation. So we have calculated mean as a mean of X and standard deviation of X as a SD of X. Is it clear? So by this we can have this Kolmogorov-Smirnov test. And the value is 0.07. If we consider 5% as the value of alpha, 0.05, then what is this? In this case, P is greater than 0.05. Then what is the meaning of this one? Please type.
P value is 0.05 and value of alpha is, we are considering 5%, that is 0.05. So in that case, what will be the decision? This data is normally distributed or not normally distributed? Just type. Response, please. What will be our decision? Is anyone here? Don't reject H. So H normally distributed, not normal. दो रेस्पॉन्स दोनों आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गए. एनीवन एल्स? किसी एक को सपोर्ट करो. दो रेस्पॉन्स दोनों अपोजिट. डू नॉट रिजेक्ट एच नोट. ओके. और कोई? और कोई? और कोई? हमने आपको बताया इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, 5% कह दीजिए या 0.05 कह दीजिए. इफ p वैल्यू इज लेस देन 0.05, p value is less than alpha, that is 0.05, we reject the null hypothesis. और in this case हमारी p value कितनी है? 0.07, which is greater than 0.05. It means what? Accept null hypothesis. And conclude that data is normally distributed. Is it clear? Please respond yes or no. Yes. Okay. So we conclude that data is normally distributed. So in this case, we have concluded on the basis of this case test. Why on the basis of the case test? Because the sample size in this particular case is greater than 50. That's why we have considered case test. If it is less than 50, then we can go for the Shapiro-Wilk test. Got it? Similarly, you can test the normality of the petal width just using the same procedure. So I'm not going to use this one. Now come to the t-test. So I told you that there is a one assumption regarding the there are some assumptions regarding the t-test. So पहली assumption क्या है? Data should be normally distributed. अच्छा, हमने क्या किया? ये मेरा x था, ये, ठीक, that is my x. t-test क्या करता है? t-test क्या करता है कि एक कोई हमने सैंपल लिया है, कोई सैंपल हमारे पास है, और हम ये बात पता करना चाहते हैं कि वेदर द मीन ऑफ दैट सैंपल इज इक्वल टू अ डिफाइंड वैल्यू और द मीन ऑफ द पॉपुलेशन. यही करते हैं. सिर्फ हमने टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए वी हैव जनरेटेड अ सैंपल. सैंपल किससे लिया है? वो एक्स से ही ले लिया है और साइज 20 का लिया है. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी हैव द अनदर डेटा सेट दैट इज x1. इज इट क्लियर? एक डेटा सेट मेरे पास x1 है और इस x1 को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि क्या इस x1 डेटा का मीन मेरा 3.05 है.
या कोई भी मीन, क्या इस x1 डेटा का मीन 2 है, 3 है, 3.5 है, 3.57 है, 4 है, 4.5, कुछ भी नंबर, दो नंबर कहां से आया? या तो आप उसको उसका पता है, या फिर बाई चांस आपके पास पॉपुलेशन का मीन पता है। जैसे मान लो कि इस केस में पॉपुलेशन का मीन पता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन? द कंप्लीट दिस डेटा इज द पॉपुलेशन, दिस वन। ओके, एंड इसका ये सैंपल है x1। Then how will we perform the t-test? This is the way to perform the t-test. One sample t-test. The data that will be used is x1, and this is mu. That means mean under h naught. Mu is equal to mu naught जिसकी हम बात कर रहे हैं. Here mu naught is mx. So this is the output. This is the output. What is the p-value here? So just see one thing. This is the test statistic that is based on x bar minus x bar minus mu naught upon s upon root n. X bar minus mu naught upon s upon root n. That is the test statistic. It follows, that statistics follows the t distribution with n minus 1 of degrees of freedom. So we have the total 20 observations. That's why the degrees of freedom for this one is 19. And the p-value is what? P-value is 0.564. So again, this p-value is greater than 0.05. So we do not reject the null hypothesis. So we do not reject the null hypothesis means what? Means is that the mean of this sample is equal to 3.05. Although the mean of the sample is x1 is 2.99. It is basically little mean of x, but it is basically the mean of x1. And this is the mean of x. So we are basically saying that this is the mean of the sample, this is the mean of the population, and by applying the one sample t-test, we are saying that the mean of this population, this sample is equal to mean of this population. Because we are accepting the null hypothesis as the p-value is greater than 0.05. Is it clear to all of you? Is it clear? Yes, sir. Anything else? Anyone else? Is it clear? Yes, Great. sir. Now similarly, regarding the paired and two independent sample, again we have generated one more sample x2 from the same population, that is x2. So for this particular purpose, basically what we need to do, we need to check the normality of x1 as well as we will check the normality of x2. ठीक, तो दोनों की नॉर्मलिटी हमारी x1 की और x2 की नॉर्मलिटी हमारी होनी चाहिए। वो x1 और x2 की नॉर्मलिटी आप इस फॉर्मूले के हिसाब से चेक कर सकते हैं। Here you can put x1 then mean of x1 SD of x1 या mean case test 2। अच्छा ये तो सपीरो से होगा because सपीरो is size is less than 50, so that's why सपीरो test x1 सपीरो dot test x2. Is it clear? So in that case, we will test the normality of the data set. Then what is the second assumption? Second assumption, that is the important assumption, and that is what? The data or the both groups should be homogeneous. That means what? That means दोनों ग्रुप के वेरिएंसेस सेम होने चाहिए, स्टैटिस्टिकली सेम होने चाहिए। ठीक, मैथमेटिकली जैसे इसमें भी दोनों में डिफरेंस है बट स्टैटिस्टिकली बोथ आर सेम, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसी तरीके से हाउ विल यू टेस्ट द नॉर्मल वेरिएंस, हाउ यू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजेनिटी और इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस। So there is a command that is where dot test
is equal where dot test x1 x2. After testing the normality of x1 and x2, we should apply the where dot test to test whether both groups are homogeneous or not. Is it clear? So we will see. Just see this p value again. एफ स्टैटिस्टिक इसके लिए यूज होता है यदि आपने वेरिएंस की टेस्टिंग की हो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर दैट फॉलोज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद N1 माइनस वन N2 माइनस वन, दोनों सैंपल्स के अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Is it clear? So in this case, what is the meaning? What does it mean? It means that both groups are homogeneous because this is the null hypothesis that both groups are homogeneous. So that means दोनों सर केस टेस्ट में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ओनली कंसीडर्ड. Yes, mean of the normal distribution and standard deviation of the population, as the mean and variance are the population parameter. So that's why we are defining the population parameter. That's why we are using the mean and SD. So SD is the square root of variance. That's why in R, so everywhere we have defined the normal distribution. So we will use only mean and SD as the parameter of the normal distribution. But जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि मीन एंड वेरिएंस पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते हैं. Is it clear? So how will we test the two independent sample t test? If you see question mark t dot test, just see this one, question mark t dot test, that is the help of the t test. ये क्या बता रहा है हमें? It is saying that x y is null. y is null का मतलब है कि यदि हम सिर्फ एक वेरिएबल पास करेंगे then it will test the one sample t test. If we pass both variables x and y, both can be passed. Alternative, by default it is taking two-sided alternative by default, but we can use alternative is equal to in double quote less or in double quote greater, like this. Alternative is equal to is less. So it is means alternative true mean is less than 3.05. यहाँ पर क्या था? True mean is not equal to, because by default the alternative is two-sided. So we have given less, that's why it is less. In place of less, you can also use the greater. Is it clear? Then by default it will test that the mean is equal to 0 by default. So just I can have only one thing, this one, t dot test x1, reject h naught. इसका मतलब है p की वैल्यू जो आ रही है 2.45 into 10 to the power minus 16. It means 0.0000 15 0 then 2.45, which is exactly equal to 0. Is it clear? Which is almost equal to 0. So in that case the mean is not equal to 0 के लिए टेस्ट कर रहा है और ये वैल्यू हमारी 0.05 से कम है p वैल्यू, तो we will reject the null hypothesis. Reject the null hypothesis और कहेंगे mean of this population or this data is not equal to 0. Otherwise we can define any value to this mu naught. Either it is the mean of the sample or any specified value mu naught. Then by default the next argument is by default they are considering paired is equal to false. Paired is equal to false. So I has told you before and after data is the paired data and independent data is
मेल और फीमेल का डेटा है, 2 ग्रुप्स का डेटा है, 2 प्लेसेस का डेटा है, 2 कुछ भी, दोनों अलग अलग इस सेंस में। और पेयर्ड में एक ही इंडिविजुअल एक ही प्लेस से 2 बार डेटा जनरेट करना, 2 बार डेटा कलेक्ट करना। इंडिविजुअल्स विल रिमेन सेम। देन नेक्स्ट where dot equal. So what is where dot equal? Where dot equal means either the variance of both the groups are same or not. चाहे आप पैरामीटर, चाहे आप इंडिपेंडेंट की बात करें, चाहे आप पेयर्ड की बात करें, दोनों के केसेस में वेरिएंस की इक्वलिटी, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस होना चाहिए. So in that case, by default, it is where dot equal false. Where dot equal is equal to false. So you can have the false means equality nahi hai. And if there is a equality, then we will use where dot equal is equal to true. And this is the 95% confidence interval. So T dot test x1 and x2 mu is equal to 0. डिफरेंस दोनों के मीन का 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा h naught is such that mu1 is equal to mu2. या दूसरे सेंस में क्या कह दें हम, आर एच नोट इज लाइक दैट mu1 minus mu2 is equal to 0. That is equal to mu. Is it true or not? So both are same. Either we will say the difference of both the mean is equal to 0. That's why mu is equal to 0. So in this case, we are considering mu, that is mean of two independent sample difference is 0. By default, paired is false. Paired is false because both samples are independent. Where dot equal, either variances are equal or not. So we have tested that, and we have the result that both samples x1 and x2 are homogeneous. So we will use where dot equal is equal to true. And if you want to calculate the 95% confidence interval, then you can just write conf dot level is equal to 0.95. Is it clear? Just this one. Again, you can use the alternative also. Alternative is equal to and not equal to, greater than or less than. Alternative is greater than, less than or not equal to. So in this case, we are getting the p-value as 0.04. 0.40. Which means what? P-value is 0.04. What does it mean? Message. What does it mean? P-value is 0.40. Batao. What will be your decision? Accept null hypothesis. Conclusion I am asking. What is your conclusion? And that is the decision, not the conclusion. Null hypothesis को accept करना, reject करना is the decision. What is the conclusion?
कंक्लूजन क्या होगा बताओ? Let me know the conclusion. Mean of both samples is same. दोनों सैंपल के मीन सेम है, या जहां से दोनों सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं या ड्रोन किए हैं, जहां से हमने दोनों सैंपल ड्रोन हुए हैं, वहां उस पॉपुलेशन का मीन सेम है। उस पॉपुलेशन का मीन सेम है, उन पॉपुलेशंस का मीन जहां से सैंपल्स हमने ड्रॉ किए हैं, जहां से मिले हैं हमें सैंपल, उस पॉपुलेशन का मीन सेम है। बिकॉज जस्ट वी आर टेस्टिंग द मीन ऑफ द सैंपल्स, बट वी आर टेकिंग द डिसीजन regarding the what we say regarding the population. Is it clear? Now just see. So in place, suppose we do not have equality of variances, then we will use where dot equal is f. This one, where dot equal to false. Normality है but homogeneity नहीं है, then just click OK. So in this case, just see the name, it will become the Welch 2 sample t-test. Before that it was the 2 sample t-test, and now it became the Welch 2 sample t-test. Again, so I'm just repeating the statements just because by assuming the condition that the x1 and x2 are not homogeneous, then how will you perform that test? So in that case, we will use where dot equal is equal to false. This one. Suppose we have the two data, before and after type, and these data set we have entered in the form of x1 and x2. Then in that case, variances are also homogeneous. So paired is equal to true. So now this data becomes this t dot test will perform the paired t test. So just only the one command t dot test, we can perform all the tests. Either it is one sample t test, two independent sample t test, or paired t test, either for the homogeneous groups or non-homogeneous groups. Is it clear? Is it clear? ये ठीक है कि टी डॉट टेस्ट की हेल्प से ही हम तीनों के तीनों टेस्ट, वन सैंपल, टू सैंपल इंडिपेंडेंट, पेयर्ड, अलोंग विद, चाहे वो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस के लिए हो या नॉन इक्वलिटी या हेट्रोसिडास्टिसिटी के लिए हो, होमोजिनिटी के लिए हो या नॉन होमोजिनिटी के लिए हो, सारे केसेस को हम इस एक ही फंक्शन की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। इस एक फंक्शन की हेल्प से हम सारे टेस्ट कर परफॉर्म कर सकते हैं, अंडर द कंडीशन दैट कि वो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से आर्गुमेंट हमें यूज करने हैं और उन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। ठीक, चलिए नाउ टॉक टू द अनोवा। अनोवा में हमने क्या बताया? इन दिस केस वी वांट टू कंपेयर द मीन ऑफ द मोर देन टू ग्रुप्स, मीन ऑफ द more than two groups, whether the mean of the more than two groups are same, mu h naught such that mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to a specified value. So to perform this type of analysis, we should have the data like iris. Attach we have already done, and in this case head,
iris. So our data should be like in that format. So one is the categorical variable, species, and that variable should have at least 3 categories. That particular variable should have at least 3 categories. And all these variables or any one of these variable will independently be normally distributed as per the category. हर कैटेगरी के लिए ये अलग अलग नॉर्मलिटी को फॉलो करना चाहिए. अब अलग अलग नॉर्मलिटी को फॉलो करना चाहिए तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? जैसे मैंने कहा सितोसा के लिए सितोसा इज इक्वल टू किसके लिए? सेपल लेंथ. तो आई कैन यूज square bracket 1 to 50. What does it mean? It means that it will give you the first 50 observation of the sepal length. ये जो आपने निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए फर्स्ट सेपल लेंथ के लिए फर्स्ट 50 ऑब्जर्वेशन, बिकॉज वी आर राइटिंग इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द वेक्टर 1 to 50. फॉर वर्सिकलर वर्सी सेपल कितना? 51 to 100. वर्जिनिका that is sepal length 101 to 150. So in this case you have this particular variable. One variable is this one variable is this one, and one variable is this one. So for all these 3 variables you have to check the normality. If all the 3 variables as per the category are normally distributed, then we can go for the ANOVA to test whether the mean of all the 3 groups are same or not. अब इस डेटा के हिसाब से स्पीसीज क्या है? इट इज अ वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स. तो जो 3 वेराइटीज में स्पेसिफिकली हमें दी हुई हैं, क्या तीनों वेराइटी की एवरेज लेंथ सेपल की या एवरेज विड्थ सेपल या पेटल लेंथ और पेटल विड्थ सेम होगी या नहीं? व्हाट इज योर टेक? क्या तीनों कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज के लिए इधर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ सेम होगी, एवरेज सेम होगा? दैट इज द क्वेश्चन. नो. तो वी विल चेक दिस बाय अप्लाइंग द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, AOV, analysis of variance, and we will use the variable and one whatever that particular categorical variable follows. So sepal length follows species. To get the ANOVA table we use summary. इसी तरीके की ANOVA टेबल बनती है. स्पीसीज में कितनी कैटेगरीज हैं? 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम P-1 दैट इज 2. टोटल 150 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी 150 - 1 दैट इज 149. और 149 कैसे होगा? टोटल हो जाएगा 142 प्लस 147 प्लस 2 दैट इज 149. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द p value. It means it is 0.2 into 10 to the power minus 16. 2 into 10 to the power minus 16. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ it is 0.0000015 times 0 then 2. ठीक है, इसका मतलब हुआ 15 times 0, also 15 times 0 decimal 15 0 and then 2.
2 into 10 to the power minus 16. Very small number. Yeah, less than 0.05. Reject H note. Reject H note means the mean of all the groups are not same. The means of all the groups are not same. How will you check it? Just one way is that mean of Sito, mean of Varsi, and mean of this. These are the three means of the three groups. एक ग्रुप का मीन 5.006 है, एक ग्रुप का मीन 5.84 है, एक ग्रुप का मीन 6.55 है. So in that case we can go for the pairwise comparison. Pairwise comparison किसके लिए करते हैं कि क्या कोई से दो का सेम है. तो सारों के ही केस में हमारी p वैल्यू 0 आ रही है. So what does it mean? It means that कि किसी भी तीनों के तीनों का 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ there is no equality. तीनों मीन आपस में बिल्कुल अलग अलग है. Is it clear? Is it clear? Yes, sir, it is clear. Any query? Any query? So this is all regarding the t-test along with the ANOVA. Now we move forward to the one important test, that is the chi-square test. And chi-square test is basically for the independence of attributes. It chi-square test for independence of association. Chi-square test for association. So what do we mean by the association? Whether two categorical variables are related or not. So related word is break or can be classified into two categories. One is the association and another one is the correlation. So relation is related word is whether x and y are related. So if we talk about the association, that means both x and y are categorical. If we talk about the correlation, then it means that both x and y are continuous in scale, continuous in nature. यदि x और y कॉन्टिन्यूस नेचर के, उनकी रिलेशनशिप को हम कहेंगे कोरिलेशन. और x और y यदि कैटेगोरिकल हैं तो उनकी रिलेशनशिप को हम कहेंगे एसोसिएशन. तो रिलेशनशिप और रिलेटेड इज अ ब्रॉड टर्म एंड एसोसिएशन और कोरिलेशन इज द टेक्निकल टर्म. तो टेक्निकल मींस यदि हम एसोसिएशन कह रहे हैं तो उस केस में वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे, और यदि हम कोरिलेशन कह रहे हैं तो इन दैट केस द वेरिएबल्स वुड बी कॉन्टिन्यूअस. इज इट क्लियर? सो हाउ विल वी यूज? तो वी विल यूज द वन R bind. तो व्हाट इज दिस वन R bind? Just see the M. So it is just 2x2 contingency table, 2x2 matrix now, because it is, so C bind can also be used to create the matrix, first column and then first row and then second row. R bind basically we have used. So similarly we can also use C bind, that is M is equal to, in the other of R it can be C bind. So now these observations can be 35 59 35 9 makes the first column and 60 41 makes the second column, because we have done C bind, column wise bind karna. And here it is the R bind. So in that case 35 and 35 and 9 makes the first row, and then 60 41 makes the first and makes the second row. Here is the reverse. Is it clear?
So what is the call names? Call names हमने कल भी किए थे. तो या तो हम दो तरीके से दे सकते हैं. When M is a matrix, then directly we can give the names, dim names. Okay, dim names. और या फिर हम कॉल नेम्स अलग दे सकते हैं और रो नेम्स अलग दे सकते हैं. जैसे कल हमने dim names इज इक्वल टू लिस्ट C, R1, R2, R3, कॉमा C1, C2, C3 फॉर्म में दिए थे परसों की क्लास में लोगों ने. उसका क्या मतलब हुआ कि रो के नेम देने थे और कॉलम के नेम देने थे. तो इंडिपेंडेंटली वी कैन असाइन द कॉलम नेम ऑफ M and row name of. Now how Y is look like? It is. So this is the data of gender, and the first one variable is the gender variable, and this is for do you smoke करते हैं या नहीं करते हैं, और gender men women or anything else. Do you suffering from any disease, yes or no? And then for the chi-square test we will use this chi-sq dot test. Chi-sq dot test, this one. Again, the null hypothesis, if it is a test, then there is a null hypothesis, and null hypothesis that there is no association between two variables. जो भी दो वेरिएबल अंडर स्टडी, here the smoke and gender, suppose. So in that case there is an association between gender and smoke. There is an association. Why so? Because we will reject the null hypothesis as p value is 0.01 and it is less than 0.05. So we will reject the null hypothesis and conclude that the two variables, whatever these two variables is, are associated. Now there is a significant association between two variables. So it is for the 2x2 contingency table. And suppose just you can do chi-sq is like a chi. The output in that chi. This one. Okay. Now if you put the dollar after chi, then whatever you want to calculate, you can extract. Statistic only, so it will print the statistic. This one, 5.5023. Chi dollar p value, then it will give you the p value only, 0.0189. Chi dollar observed value, then it will give the observed. Expected, this one is like, these are the expected values. Is it clear? So similarly you can go for the three categories like this. This is my M. Gender and party. Whether whether the gender having an influence from a particular party. So this is the way to enter the data. It's up to you in what way you want to enter. You want to row bind or column bind or whatever. It's up to you. And then this is chi-sq test and chi-xsq. Again, there is an association between gender and party voting or party liking. कि आप कौन सी पार्टी को लाइक करते हैं, डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिकन. So this is all these things. So it is clear to all of you? Sir, in chi-square, why after correct
the false is written? Basically, there is a one assumption regarding the chi-square test that the in case of too close to table contingency, the each expected frequency should be greater than 5. Each expected frequency should be greater than 5. So if you see the expected frequency in this case, so all the expected frequencies are greater than 5. So in that case, there is no need of the Yates continuity correction. So this is regarding the Yates continuity correction. If you see the chi dot test question mark, yes, this only when computing the test stress for too close to table. If no correction is done, then it automatically do. Is it clear? They have given how to calculate the residuals, how to calculate all these things, how to extract all the values. So I have considered this example from here only. इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं. इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए. So whenever for the too close to contingency table, if the expected frequency is less than 5, then we should go for the correction as true. And by default, the correction is true. By default, correction is correct is true. The Yates correction is true. So that's why if the expected frequencies are not less than 5, that's why we have to use correct is equal to true. Is it okay? Yes, sir. So similarly, if we have the paired data and that paired data is a categorical paired data. Categorical paired data with two categories only. Joint pain है या नहीं है, and then we have a treatment, and then again joint pain है या नहीं है. That is only that. Categorical paired. So in that case, we use McNemar test. अब पता नहीं कितने लोगों ने आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, just telling to you. McNemar. Again, we will create the cross table. 2 cross 2 table is joint pain after, joint pain before. Yes and no. In that both same patients have the categorical response or only 2 responses. Yes or no, yes or no. So for the testing of this one, we go for the McNemar test. Is it clear? Just only McNemar dot test table correct is equal to false. Again, in this case, if you calculate the expected frequency, then I think there is no association. अब वो लगा एम पे भी देगा जो एम हमने ऊपर कैलकुलेट किया है. इस एम के लिए भी लगा देगा. क्यों? In this M, it is a too close to contingency, but this test is not meant for this particular M. Why so? Because this M is not a paired categorical data set. M is not having the paired categorical data. It is a categorical, but not paired. So we should not apply this McNemar test to this M, small m. Why so? Because small m is this data set. Woman, man, and yes, no. Clear? So can we take the 8 to 10 minutes break? So we will start at 1850, 650 actually. First, we will discuss initially some non-parametric test and then move forward to the regression and correlation. Ma'am? Meenu ma'am? हाँ जी सर. Can we take the 8 minutes break? 8 to 10 minutes हाँ break? yes sir, yes sir. Okay, okay.
Okay. So 850, 650, 651 we will start. Okay. Okay. So as in the previous case, I already discussed, to perform the non-parametric test. So this chi-square test is also chi-square test is also part of the non-parametric test. In that case, we have the number of tests are available. Specifically in test, basically in non-parametric test, we compare or we test for the median. We test for the median, whether the median of a particular group or particular data set is equal to the population median, or the other, generally the hypothesis that whether the distribution function capital F, whether the distribution function of all the populations are same, या उस पॉपुलेशन का सैंपल उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, या दो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. जैसे हम मीन की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर हम दो चीजें कहते हैं, इधर द मीडियन ऑफ बोथ द पॉपुलेशन बोथ द ग्रुप और पर्टिकुलर सैंपल is equal to this one, or the distribution of the sample is that particular the distribution of the population is equal to the whether the distribution of both groups are same, distribution of both groups are same, या एक सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिससे ये हमारा सैंपल ड्रॉप हुआ है, उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिससे ये हमारा सैंपल ड्रॉप हुआ है. So in that case, we will have the Wilcoxon signed rank test to test the median of a specified sample. So you can go for the again the same thing. Again, same thing. Either you can go for the one sample t-test or two sample t-test. If it is paired, then again as in case of t-test, we have the Wilcoxon test. Wilcox dot test that is available in stats package. Again, the same thing regarding to the t-test. If you have the one sample non-parametric test, that will be, you will pass X only, and all these things can be set as per the requirement. Mu is there. This mu means it is the median. This mu means it is the median. If you pass the two data set, two variables X and Y, then he will test by default according to the two-sided, and then mean of this one is 0 difference, and then paired is false. If you have the data paired but data does not follow the normality, in that case you can have Wilcoxon test. Is this case, it will be, in this case the paired will be equal to true. So you can use all these test as per the requirement. Simple or similar to the T dot test. T dot test में एक सैंपल का करना है, दो इंडिपेंडेंट सैंपल का करना है, या दो पेयर्ड सैंपल का करना है. तो सिमिलरली वी कैन यूज विल्कोक्सन, एक सैंपल के लिए करना है, दो इंडिपेंडेंट सैंपल के करना है, या पेयर्ड के लिए करना है. तो रेस्ट थिंग विल रिमेन द सेम. हाँ, यहां पर क्योंकि वेरिएंस के रिगार्डिंग कोई एजम्पशन नहीं होती है, इसलिए वो ऑप्शन हमारे पास यहां नहीं है. तो आई थिंक यू कैन इजीली परफॉर्म द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूजिंग विल्कोक्स डॉट टेस्ट.
हमने y माइनस एक्स लिखा है यहाँ पर, तो सिंपल आप x और y पेयर ट्रू है, तो सिंपली सपोज दिस इज माई x, दिस इज माई y, एंड विलकोक्स डॉट टेस्ट x, ये चेक करना कि वेदर मीडियन इज इक्वल टू 3, mu इज इक्वल टू 3, साइन रेक टेस्ट is not equal to 3 as p value is 0.07. दो सैंपल लेने हैं, तो x कोमा y एंड mu is equal to 0 by default. p value is 0.03. क्वांटिटी करेक्शन वगैरह को सबको हम फॉल्स कर देंगे जो भी हमारे आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से पेयर्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो पेयर्ड का हमें मिल जाएगा। नेम इज विलकोक्स। एग्जैक्ट टेस्ट भी हम हटा देंगे, एग्जैक्ट के लिए थोड़ा अलग कंडीशंस बनती हैं, तो इसको भी हटा देंगे। एग्जैक्ट इज इक्वल टू नल, करेक्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये ऑप्शंस भी हम इसमें डाल देंगे। करेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स, दिस एग्जैक्ट मैच। So with this, we end with the parametric test. Kruskal-Wallis is parallel to the one-way ANOVA in non-parametric. तो उस केस में भी सिंपल, तीन वेक्टर हमारे पास हैं x, y and z, तीन वेरिएबल हमारे पास है, and then we can create the list of x, y and z, and then we can apply the Kruskal test. This p value, it's showing that the median or the distribution of all the three samples x, y and z are same. Median or distribution. ठीक, या जिस तरीके से हमने उसके लिए किया था सैंपल स्पीसीज के लिए, सैंपल लेंथ में स्पीसीज के लिए किया था, ऑल्दो दैट डेटा वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट टेस्ट लगाना कैसे, you can see that Kruskal-Wallis rank sum test, the name is that Kruskal dot test. So we have used the data of sample length which has the three categories corresponding to species. ठीक, in that case iris data का set है या sample width के लिए। तो this is the way where you can use either your data set that you have imported from the Excel or from any other source to apply the Kruskal test, or directly you can enter the data and you can check the normality of x, y and z independently or individually. If x, y and z are not normally distributed, then we cannot go for the ANOVA, whether the mean of all the three groups are same, or three variables are same, three data set are same or not. In that case, we have to go for the Kruskal-Wallis test. And that Kruskal-Wallis talks about the whether the median of all the samples or the distribution of all the samples are same or not. Is it clear? So with this, we end the parametric and non-parametric testing. Now just talk about the simple correlation and regression. So suppose we have this x now and this y. So I'm just using one command because most of the time I may have some issue because I have using the repeated names. So that's why I want to use this RM list. Okay. Now this is my x, this is my y, and to calculate the correlation coefficient between x and y, the value is minus 0.0948. What is the range of correlation? Range of correlation.
What does it mean correlation is minus 0.948? What does it mean? क्या मतलब है इसका कि कोरिलेशन की वैल्यू हमारी -0.9487 आ रही है? जल्दी बताओ। बोलो, करो टाइप जल्दी जल्दी। वीक कोरिलेशन, two variables are negatively correlated, strong negative correlation. What do you mean by the negative correlation? What is negative correlation? What is negative correlation? Participant, you can unmute your mic and then give the answers also. Change in one is not affecting the other. If one is increasing, then another is decreasing. So the negative correlation tells you the direction of the correlation. Direction of the correlation. So what is the meaning of the direction? Whether one is increasing or the other is decreasing. One variable is increasing and the other is decreasing. One is increasing, another one is decreasing. So if we change, opposite direction changes actually. One increase, other decrease, other increase, one decrease. Okay. So we talk about this, and the range of the correlation is -1 to +1. So for any data set, the correlation will always be lie between -1 to +1. So if the value is greater than 0.7 or 0.8, greater than 0.7 or 0.8, so we say it is a good correlation. Yeah, there is a significant correlation. So we can also test the value of the correlation, whether the correlation between two number is 0 or not. So again, the null hypothesis for correlation testing is H naught such that rho is equal to 0. Rho is equal to 0. This is the null hypothesis. Alternative, again, anything that can be versus H1 such that rho not equal to not equal to 0 or greater than 0 or less than 0, depends on that. So in that way we can test the correlation, and the condition and the test or the function that is used to test the correlation, that is the core dot test. Core dot test. So in this case we reject the correlation, we reject the null hypothesis. And reject the null hypothesis, what does it mean? It means that there is a significant correlation between X and Y. What is the basic difference between the regression and correlation? Regression and correlation. Basic difference. So can you please tell me the definition? What do you mean by significant? Significant, okay. Actually, when we are talking about the in statistics, or we are testing here, so we are considering the 5% error, 1% error, or 2% or 10% error. Okay, that is the alpha. So in that case, as in the previous case, and that was in the initially, it was this one.
Yeah. Why it is not X is not there? This one. So if you talk about this one sample t-test, so in this sample t-test, just you can see that I also told you that this is the mean of X and this is the mean of X1. So initially we have mean of X or mean of X1. But this t-test is saying that there is no difference. H naught is accepted. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, although there is a difference between these two numbers, mathematically both are different. It is a 3.05 and it is a 3.15. So mathematically both numbers are different. There is a difference between these two numbers, but this difference is not significantly different. This difference is not significant difference. Significant से मतलब हुआ, why we are saying this difference is not significant difference? Because we are accepting the null hypothesis. Accepting the null hypothesis का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि जो सैंपल का मीन है x1 का, वही इस मीन x के इक्वल है. ठीक? तो that means these two values, the difference of these two values 3.05 and 3.15 is not significant difference. तो जब स्टैटिस्टिकली हम बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट होगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है. तो सिग्निफिकेंट से मतलब है कि वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंस है या नहीं है. मैथमेटिकली ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर. जैसे इस केस में भी आप देख रहे हैं 3.05 3.15, तो मैथमेटिकली देयर इज अ डिफरेंस, but statistically there is no difference. There is no difference, and then we say that there is no significant difference. There is no significant difference. But suppose we reject this null hypothesis with this number only. We reject this null hypothesis. यहां पर यदि हमारी null hypothesis रिजेक्ट हो गई होती, then we will say that there is a significant difference. इसका मतलब जो ये डिफरेंस आया 3.05 और 3.15 में, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. उस डिफरेंस को डिफरेंस कंसीडर किया जाएगा. और नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दिखने में तो वो डिफरेंस है मैथमेटिकली, बट स्टेटिस्टिकली वो डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है, या बाय चांस है. इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is the way we are saying that there are difference here. P value is 2.04 into 10 to the power minus 9. It means that reject H naught. Reject H naught means that the difference is not, the correlation between these two is not equal to 0. Because H naught is what? H naught is whether the correlation between these two is equal to 0. So you have tested that the correlation between these two is not equal to 0. या there is a significant correlation. Significant से मतलब यहां पर सिर्फ इतना होगा कि वो correlation दोनों का 0 नहीं है, या 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 नहीं है. यदि वो डिफरेंस जैसे 3.05 और 3.15 था, p वैल्यू से हम एक्सेप्ट एच नोट कर रहे थे, तो इन दैट केस वी कैन से दैट दैट डिफरेंस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. ठीक. नाउ हाँ, जस्ट क्वेश्चन इज व्हाट, जस्ट रिप्लाई द क्वेश्चन, माय क्वेश्चन एक्चुअली. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन? क्विकली, क्योंकि हमारे पास अब बस थोड़ा ही टाइम बचा है सेशन कंप्लीट करने के लिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन correlation and regression?
डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सबने पढ़ा हुआ है ना, लगभग लगभग सबको आइडिया होगा कोरिलेशन रिग्रेशन का। हेलो, Sir, अब ऐसे केस में लग रही है कि मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही है? the correlation tells you that if there is any association, and regression, I think it just predicts if there is any. It tells you, it gives you a prediction if there is any association or not. एसोसिएशन तो मैंने अभी आपको बताया कि जब रिलेशनशिप की हम बात करें तो कैटेगोरिकल है तो एसोसिएशन कहेंगे, कॉन्टिन्यूस है तो कोरिलेशन कहेंगे। अब Oh. यहाँ हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कोरिलेशन की बात करें तो कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। और रिग्रेशन कोरिलेशन को एक साथ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो कैटेगोरिकल तो आएगा नहीं, है ना। तो एसोसिएशन वर्ड तो कोरिलेशन के साथ ठीक नहीं है। और कोई जल्दी क्विकली 1 मिनट के अंदर। So correlation is the relationship between two variables, and ओके गुड। regression is the relationship between dependent and independent variables. ओके, और कोई थोड़ा सा और? चलिए, कोरिलेशन टॉक्स अबाउट जस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की रिलेशनशिप या दो वेरिएबल के कोरिलेशन को वो बता रहा है सिर्फ आपके, ठीक है। दो वेरिएबल किस तरीके से कोरिलेटेड हैं या किस तरीके से रिलेटेड हैं, ठीक। उसमें आपने कहा देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, तो आपने कहा इफ वी चेंज इन अ वन वेरिएबल देन अदर विल बी चेंजेस either in a positive in the same direction or opposite direction, यही कहा ना आपने। बट हाउ विल यू डिसाइड कि किस में चेंज करें तो किस में चेंज होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? दो वेरिएबल रिलेटेड हैं या कोरिलेटेड हैं, ठीक। आपने कहा कि एक में हमने चेंज किया तो दूसरे में पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होगा, यही तो कह रहे थे ना आप कोरिलेशन में। तो just correlation talks about the relationship between two variables, but regression talks about the causal relationship। causal, cause कौन किसका बन रहा है, किस में चेंज करें जिससे दूसरे पर चेंज होगा, वो कौन सा है, किसका इफेक्ट किस पर है। कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली, कौन किसका कोज बन रहा है और कौन किसके लिए किस पर किसका इफेक्ट आ रहा है। तो टॉक्स अबाउट द कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन जस्ट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप, कोरिलेशन अबाउट, तो वहां पर सिर्फ इफेक्ट कोज एंड इफेक्ट की बात हम नहीं करते कोरिलेशन में, जस्ट वहां पर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि जिसके आपने फिर कहा हु वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट, वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट। सो इन दैट केस इंडिपेंडेंट में हम चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट में हमारा एज पर द रिलेशनशिप, एज पर द कोरिलेशन, उस तरीके से चेंज हमारा रिफ्लेक्ट होगा। सेम है डायरेक्शन में है तो x को इंक्रीज करें तो y भी इंक्रीज करेगा, तो इन जनरली वी से y इज द डिपेंडेंट, x इज द इंडिपेंडेंट। तो x में हमने चेंज किया, इंडिपेंडेंट में चेंज किया, तो डिपेंडेंट y में भी चेंज होगा, either in the same direction or in the opposite direction, that defined by the that direction or that magnitude is depend on the relationship, that means on the correlation। बट जो हम कहते हैं ना कि एक में चेंज करें दूसरे में चेंज, भाई कौन से एक में चेंज करें जो दूसरे में चेंज होगा, that will study under the, that will comes under the regression, causal and effect relationship, ठीक। so we have assumed that for this data set, okay, there are number of data set that you can easily select and perform the regression, but for the simplicity I have considered these two data set x and y, these are the simple number, and then we have also tested the correlation and the way to perform the simple linear regression model, simple linear regression model, that is LM, linear or model। Now if you have the data then you can easily extract
or choose two variables from the data set. One is the independent and one is the dependent. Or you may also have, for the multiple linear regression, you may also have the more than one independent variable. Is it clear? So for the simple, so easily you can extract one dependent and one or more than one independent, one dependent and one or more than one independent variable from any data set. Like sepal length, sepal width, petal length, petal width, we can extract any number of variables. In the yesterday's case, empty cars data, we can extract any number of the variables from that data set. Is it clear? So in that way, easily you can extract your data if it is in your Excel sheet or if it is in your large data set format. And otherwise, you can directly go for this kind of directly enter the data X or Y, and easily you can perform the linear regression model with the help of LM. Linear model. Just print the M. So in this case, the model is Y is equal to beta naught plus beta 1 x. Plus beta 1 x plus again, if it is a model, simple linear regression model, it will have some assumptions. क्या क्या assumptions है, बस मोटा मोटा मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ. x और y आपस में लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए. तो जो कोरिलेशन आता है दैट टॉक्स अबाउट द लीनियर रिलेशनशिप ओनली. लीनियर रिलेशनशिप कि x और y हमारे लीनियरली रिलेटेड हैं या नहीं है. कोरिलेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं होता है कि x और y के बीच कोरिलेशन जीरो का मतलब ये नहीं कि वो रिलेटेड नहीं है. दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड. देयर मे बी अ चांस कि दे आर कर्वी, देयर इज अ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप. कोई और फंक्शनल फॉर्म की रिलेशनशिप बन रही होगी, बट दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ लीनियर. Along with that, one basic assumption is that epsilon follows normal distribution with mean 0 and variance sigma square. ठीक, ये assumption हमारी होती है. And in that way, similarly, the distribution of y will also again normal 0 sigma square. तो एक तो लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए एक्स और वाई के बीच. दूसरा, जो एरर है आपकी इस तरीके से होनी चाहिए. ऑब्जर्वेशंस आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ऑब्जर्वेशंस आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो ये तीन मेजर अजम्पशंस हैं यहां पर. यदि हमारे पास यहां पर एक कंडीशन और आ जाए, बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन, तो इस केस में एक कंडीशन हम कहते हैं कि जो ये x1 है और ये x2 है, दे शुड बी अनकोरिलेटेड. दे शुड बी अनकोरिलेटेड. कोरिलेशन बिटवीन x1 and x2 be 0. Correlation between x1 and x2 be equal to 0. Otherwise, there is a problem of multicollinearity. Problem of multicollinearity. यदि ये कोरिलेशन इन दोनों के बीच में जीरो नहीं है, ठीक. और यदि एरर का डिस्ट्रीब्यूशन, एरर हमारी इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो दिस इज अ केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन. तो ऑटो कोरिलेशन को हम डार्विन वाटसन स्टैटिस्टिक यूज करते हैं और मल्टी कोलिनिटी के लिए वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF यूज करते हैं. ठीक. So come to the next. So suppose you have given this beta naught value and this is the beta 1 cap value, जो simple linear multiple आपने किया होगा. If you write down this in this way, then you will have the all the data set. Summary of M.
तो these are the residuals, minimum, maximum, Q1, Q2 and Q3. These are the estimate of the coefficient and this is the significant value. ये significant है, it should be significant. Significant से मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, if we unit change in x, हमने x को 10 से 11 कर दिया, x को 10 से 11 कर दिया, 1 यूनिट इंक्रीज, देन y में कितना चेंज आएगा? क्या आप मुझे इस नंबर को देख करके ये बता सकते हैं कि यदि मैं x में एक नंबर का इंक्रीज करूं तो y में कितना इंक्रीज होगा, y में कितना डिक्रीज होगा? क्योंकि कोरिलेशन नेगेटिव है। बता सकते हैं? x आपने भी कहा ना, x एंड y आर लीनियरली रिलेटेड, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं, मैंने ये भी मान लिया कि x मेरा इंडिपेंडेंट है, y मेरा डिपेंडेंट है, तो यदि मैं x में एक नंबर बढ़ा दूं, जैसे 10 था तो 11 कर दिया, जैसे ये मेरा 2 है, 3 है, इसको मैंने 3.3 को मैंने 4 कर दिया, 4 को 5 कर दिया, 5 से 6 हो गया। यूनिट चेंज करने से कोरस्पोंडिंग y पर कितना फर्क आएगा? तो y विल डिक्रीज, नो, y विल डिक्रीज 2.238 times. Y will decrease. Why we are calling it decrease? Because the symbol is negative. Because the correlation is negative. That's why that is why we are saying it will decrease. वो correlation just it is only regarding they have the significant linear relationship. उसका और कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप अलोंग विद द किस लेवल की हमारी रिलेशनशिप है, कितनी स्ट्रोंग है, वो उतना बता रहा है। जितना क्लोज टू 1 होगा इधर टुवर्ड्स द -1 और टुवर्ड्स द +1, जितना क्लोज टू 1 होगा, चाहे -1 के पास को +1 के पास, उतनी ही स्ट्रोंग रिलेशनशिप है। बट यदि हम एग्जैक्ट बात करें कि एक में हम एक्स में हम यूनिट चेंज करें तो वाई कितना चेंज होगा? वाई विल चेंज बाई दिस β1 कोफिशिएंट। जैसे हम इसकी बात करें तो एक वेरिएबल हम रखेंगे, जब β1 का कैप आ गया तो दिस इज द एस्टिमेट, इन दैट केस दिस इज द इक्वेशन। Had y is equal to y cap is equal to what are these pair estimates? This is the equation into x या x जितना भी रखना है, एक ही x है तो x भी रख सकते हैं और एक से ज्यादा है तो दिस इज द फिटेड इक्वेशन। अब इसका मतलब ये है, इसे मैं हटा दूं, ठीक, इसको मान लीजिए कि ये नहीं है अब आपके पास। सो इन दैट केस इफ x यूनिट चेंज 10 से 11 कर दिया हमने, तो y मेरा कितना बढ़ जाएगा, कितना घटेगा? -2.238, मतलब 2.238 टाइम्स y में चेंज आएगा। x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा चलो ये बताओ, x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2.238 माइनस में, माइनस जस्ट नेगेटिव के लिए, और x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.47 समथिंग, 4.4। तो x में एक नंबर चेंज करने पे y में कितना चेंज हो रहा है? 2.23 टाइम्स। और वो क्योंकि सिंबल आपका नेगेटिव का चल रहा है तो इसलिए उसको हम कह रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है। सिंबल आपका पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं कि उतने वो इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन using this equation we can calculate the fitted values। जैसे इसी से है, बस x की वो वैल्यू हम रखते चले गए जो हमें दी हुई है एंड कोरस्पोंडिंगली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y हेड।
x की ये वैल्यूज हम रखते चलेंगे जो हमें दी हुई है यहाँ, ये सारी, and correspondingly using this expression we can have the value of y. This is the y hat, this one. What is residual? Residual is, that is e is equal to y minus y hat, or it is equal to y hat minus y. या तो y माइनस वाई हैट कह दीजिए या y हैट माइनस y कह दीजिए, difference. And that's why it is a difference between these two numbers. That's why the sum of this will be 0. This is the residual. This is the random error. So this is the difference between random error and residual. Residual is the estimate of the random error. One way you can say that. Estimate of the random error. ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिस इज द रेजिडुअल. वो रैंडमली है, ये उसका एस्टिमेट उस एरर, या ये ऑब्जर्व्ड एरर है, कैलकुलेटेड एरर है जो आ रही y माइनस वाई का, क्या? तो दिस इज द रेजिडुअल. And that ANOVA table which we have got here, this ANOVA table can also be get using this AOV command. This ANOVA table only, सिर्फ इतना पोर्शन, ये और ये. What is the role of this intercept term in the whole regression model, and also when we are not considering intercept, then what is that? Okay, इसका रोल सिर्फ इतना है, यदि हम ये टर्म हटा दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे तो भी कुछ रेस्पॉन्स है, तो भी कुछ रेस्पॉन्स हमारा आएगा, ठीक है? और तो भी रेस्पॉन्स कितना होगा? तो दैट्स वाई इज इक्वल टू द बीटा. दो रेस्पॉन्स किसकी वजह से आ रहा है? वो रेस्पॉन्स सिर्फ रैंडम एरर की वजह से आ रहा है अपने आप. जैसे हमने कोई भी इल्ड लिया, मतलब कोई भी जैसे कोई इल्ड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने कोई फर्टिलाइजर्स डाला, या बाई चांस जैसे हम आपने कोई अपना कुछ करना भी नहीं चाह रहे, उसके बावजूद भी कोई प्रोडक्शन वहां पर हमें मिल रहा है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन जिसको आप एक तरीके से कह रहे हैं, उतना तो प्रोड्यूस हो ही रहा है. इन दैट वे उसको हम किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करना चाह रहे, बट उतना प्रोडक्ट हमारा नॉर्मल वे में निकल करके आ रहा है, एवरेज वे में निकल के आ रहा है. दैट इज द दैट दिस वन ड्यू टू आफ्टर दिस वन, वो इतना है सिर्फ. मॉडल इज दिस वन. तो ये किसकी वजह से? दिस इज द रेस्पॉन्स. और वो रेस्पॉन्स किसकी वजह से है? इसके इक्वल है वो रेस्पॉन्स बीटा नोट के, ठीक. और यदि ये टर्म हमारी नहीं रहेगी, तो जब हम लोग मॉडल्स के पैरामीटर के एस्टिमेशन की हम बात करते हैं, तो कई जगह पर हमारा इस टर्म का रोल नहीं भी रहता है. उसको हम कहते हैं कि मॉडल विदाउट इंटरसेप्ट टर्म. मॉडल विदाउट इंटरसेप्ट टर्म. इसको यदि दूसरे सेंस में आप देखें, तो जो मैं ये मॉडल बनाता हूं यहाँ पर, जो रिग्रेशन इक्वेशंस मेरी इस तरीके के प्लेन पर है, तो ये इंटरसेप्ट ये कह रहा है, ये लाइन. ट्राई करता हूँ दूसरा. ये मेरा x है, ये मेरा y है. तो जो इन दोनों के बीच की फिटेड लाइन होगी, दैट पासिस थ्रू दिस वन. तो ये क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट
that is the value of beta naught. This value, if it is passes through this one, this origin, then in that case this beta naught is equal to 0. If the fitted line passes through the origin, in that case the intercept is 0. और यदि वो यहां जा रही तो this is the intercept. So in that case it is y hat is equal to this beta naught cap plus बीटा नोट कैप वैल्यू. लो लिखने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है क्योंकि मैंने पेन नहीं लेकर के बैठा, प्लस जो भी आपका बीटा 1 बनेगा उसके वाई कैप की वैल्यू ये होगी. एस्टिमेटेड लाइन जो आपकी बनेगी वो यहाँ आएगी. और यदि आपकी वो इंटरसेप्ट 0 हो जाए इस केस में तो बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो दैट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन. और स्ट्रेट लाइन होगी ये बिकॉज देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप. अब वो किधर को भी हो सकती है. दैट लाइन मे बी लाइक दिस वे, in that way also, and in that way if it is so, ये वाली लाइन की हम बात करें, in this case it is the negative correlation. That line can also passes through this point. In this case beta naught is 0. So this model is without intercept. It is clear? So in this case you have written this one, and this is testing about the whether the overall model is significant or not. If under H naught the model is not good fit, and we reject that null hypothesis, model is good fit. The same residuals and fitted values can also be obtained from the ANOVA table. This AOV function. And for summary of AOV, we have do this one. And if you have a more than one independent variable, then just rather than doing this one, you can also use ANOVA, complete ANOVA, and LMY follows X. तो जो हमने यहाँ पर समरी से इस कमांड के लिए यूज किया है, सिमिलर रिजल्ट वी डायरेक्टली गेट अनोवा कमांड से. बस उतना फर्क है दोनों में. And if we have a more than one independent variable, then we can use x1 plus x2 plus x3 plus x4. This is for this particular model. इसकी हम बात कर रहे हैं. बीटा नोट प्लस बीटा 1 x1 plus beta 2 x2. यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दैट दिस मॉडल कैन बी यूज्ड. LM y follows x1 plus x2 या AOV y follows x1 plus x2. This one. यदि x2 x3 x4 है, then you can just write down x3 x plus x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 in that way. Rest will be same. जो तीन हमने assumptions बेसिक इनिशियली बताई थी, independent of observation, constant variance and normal t, that can be done using these three plots. इसको बेसिकली हम बोलते हैं विंडोज पे बना लेते हैं. तो ये पैकेज, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रेसिडुअल एनालिसिस. रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स, नॉट एनालिसिस. रेसिडुअल डायग्नोस्टिक. तो तीन चीजें हमें उसकी देखनी है, नॉर्मलिटी ऑफ एरर की, कांस्टेंट वेरिएंस की और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की. जैसे हमने इसको बताया भी आपको कि एरर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कांस्टेंट वेरिएंस एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस. तो तीन चीजें रिगार्डिंग दिस रैंडम एरर. तो दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल डायग्नोस्टिक एंड दिस कैन बी डन यूजिंग, अदरवाइज वन बाय वन भी कर सकते हैं. ये जो मैंने कमांड आपको लिखी हुई है इनको आप चला करके भी देख सकते हो. वन बाय वन किया जा सकता है
और या फिर सारों को इतनी तीन हमें ये लाइब्रेरी यूज करते हुए ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। यदि ये सारा इस तरीके का लाइन प्लॉट टाइप बन रहा है तो दैट मीन्स हमारी लाइन यदि ऊपर नीचे टाइप जा रही है ऑब्जर्वेशंस, तो दैट मीन्स दीज हैव अ कांस्टेंट वेरिएंस। यहां से रेजिडुअल्स मिल गया, रेजिडुअल प्लॉट्स मिल गया, तो वो सारे के सारे हमारे कंडीशंस इन तीनों केस इससे वेरीफाई किए जा सकते हैं। ठीक, तो इन दैट केस ऑल द अजम्पशंस आर सेटिस्फाई। तीनों केस के लिए तीनों की तीनों अजम्पशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जो ये बना रहा है फिटेड वर्सेस स्टैंडर्ड रेजिडुअल, यदि ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है तो दैट मीन्स ये हमारा वेरिएबल उसके लिए है, क्या नाम है, कांस्टेंट वेरिएंस के लिए। इसका मतलब वेरिएंस कांस्टेंट है। यदि ये हमारा इस फॉर्म में ना बन करके कोई फनल टाइप बन जाता, फनल मतलब कीप टाइप का बनता, कुछ इस तरीके का बन जाता ये आपका, ये ग्राफ आपका स्पेसिफिकली ऐसे, वो ग्राफ का जो डेटा है कुछ इस तरीके से बनता ऐसे करके। जो अभी आपका कैसा बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप का जा रहा है ये, इस स्पेसिफिकली दैट इज फॉर द कांस्टेंट वेरिएंस। ये दोनों नॉर्मलिटी के लिए, ये भी और ये भी, क्योंकि प्लॉट है ये, और ये आपका डेंसिटी प्लॉट, और ये आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए। Independent observation both to regarding the normality, and this is for constant variance. If it is lie between all this, इस तरीके का बन रहा है, ऊपर नीचे की तरफ की रैंडम ऑब्जर्वेशंस आ रही है, इट इज अ कांस्टेंट वेरिएंस। और यदि कोई इस टाइप की कीप टाइप का आपका ये बन जाता है इस तरीके से फनल कीप, तो दैट मीन्स नॉन कांस्टेंट वेरिएंस या वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट। If you have any query, then you can ask. So chi-square is a parametric or a non-parametric distribution? Chi-square, if you talk about the test for association, that is the non-parametric. If you talk about the chi-square for goodness of fit, in that case it is parametric. Any other query? Any other query? So can we end the session? Yes, sir, just a moment. Thank you Yes. so much, sir. I would now like to request all the participants to kindly switch on their cameras. And if anybody would like to share their feedback or thoughts about the workshop, you're welcome to do so now. Anybody? Any participant who wants to share the feedback? Okay. I don't think anybody wants to. So I hope that you all enjoyed the session and found it very insightful. I would now like to hand over to Ms. Shivani. Nisha ma'am, do you want to say something? I think no. Okay, so I want to conclude the report of this workshop. The 1 week workshop on SPSS in R programming concluded successfully with enthusiastic participation and positive feedback from everyone involved. The workshop was conducted through a series of 6 engaging sessions that focused on developing a practical understanding of data analysis using SPSS and R.
Throughout the sessions, participants explored various topics, including data handling, performing statistical tests, and creating visualizations using both software tools. Each session was highly interactive, and all queries raised by participants were addressed and answered sincerely, ensuring clarity and understanding at every step. We were delighted to witness the active involvement of over 180 participants, reflecting the growing interest in analytical tools and programming for data-driven decision-making. We express our heartfelt gratitude to Dr. Anju and Dr. Ashok Kumar sir for their valuable time, insightful guidance, and effort in making this workshop an enriching learning experience. We would also like to extend our sincere thanks to our principal, Dr. Harpreet Kaur ma'am, for the continuous encouragement and guidance, which greatly contributed to the success of this workshop. A special thanks to Meenu Goyal ma'am for her constant support and coordination in organizing this event successfully. We would also like to acknowledge the organizing team, Shivani, Charvi, Tanisha, Anya, Anusha, Tripti, Mehak, Arushi, Priyanshi, Vallari, Suhani, Sanvi, Ridhima, Nirjara, Kanera, and Paruna for their dedication and teamwork, which played a key role in the smooth execution of the sessions. As we bring this workshop to a close, we extend our sincere thanks to all the participants for joining us and being a part of this wonderful learning experience. Have a great evening ahead. Thank you. Thank you so much. I would now like to invite Komal Goyal ma'am. Thank you, Anya, for inviting me to thanks on behalf of Antan Mata Sundari College. Last of all, I'd like to thank the respected principal ma'am for organizing this great workshop for students and for faculty. Next, I would like to thank our organizer, Dr. Meenu Goyal, and her organizing team for organizing this valuable workshop for students and faculty. I would also like to express my sincere thanks to both the speakers, Dr. Anju and Dr. Ashok, for sharing their valuable knowledge with our participants. Also, heartfelt thanks to all the participants for making this workshop a great success. Thanks to all once again. Have a nice day. Hand over to Anya. Thank you so much, ma'am. Finally, thank you everybody for joining us throughout this whole workshop. We hope you found the sessions engaging, insightful, and useful for your future work and learning. Thank you so much. Thank you, everyone. Please don't forget to fill the feedback form. Ma'am, can we end up the meeting?